Assalamu alaikum and a very good morning to my dear parents. Very, very good morning, very pleasant morning to all of you. I say once again good morning to our respected chief guests, dedicated teachers, supportive parents and enthusiastic students. It brings me immense pride and joy to deliver this welcome speech for Sports Day by Principal as we gather to celebrate our annual tradition of athletic excellence. First, I extend a special welcome to our distinguished guests who have gloriously joined us today. Your inspiring presence motivate the next generation to pursue their passion and push the boundaries of what they want. My dear parents, a heartfelt thank you to all the families of the parents who are sitting here as an audience. Your ongoing support and encouragement have been instrumental in preparing our students for today's competition. It is our guidance and belief in your children that help shape not only great athletes but also responsible citizens. It's a break from academic routine, giving us a chance to celebrate fitness, teamwork and spirit of sportsmanship. Sports Day is more than a series of events and matches. It serves as a reminder that education is not limited only to the textbooks alone. While academics lay the groundwork, extra co-curricular activities such as sports foster vital qualities like discipline, teamwork, commitment, leadership. These life lessons stay with the students long after they leave the school grounds. Discipline and respect support each other and play in the true spirit of sportsmanship. May today's event create inspiring memories for all of us. Am I right? Yes. Every year our students raise the bar with their enthusiasm and participation in march past, drills and competitions. Their dedication during weeks of training is clear today, and whether they win or lose, they gain experiences that help them grow stronger and more focused by academically and personally. On this occasion, I would like to express my gratitude to the teachers and non-teaching staff who work on those days and nights on a very short notice. They arranged this beautiful grand mega event. I appreciate my teaching staff and my non-teaching staff. I request the parents, please put your hand together for my team. On this occasion, I would like to express my gratitude to our worthy Director Sahab, whose services and cooperation is always with us all the time in thick and thin situations, and whenever we are going to arrange such events, he is Alhamdulillah all time on front foot, and we really appreciate. Thank you, sir. To all our young athletes, I urge you to strive for your best, support and cheer one another and enjoy every moment of today's event. Remember that in sport, true victory comes from the participation, respect and sportsmanship. As you compete, embrace every challenge with honesty and determination. Dear parents and respected audience, it's a day for sportsmanship and memories. Sports Day of Allied School China scheme is a great way to bring students together and promote the healthy competition. It provides a platform to the students to showcase their talent. Sports do not build the character, but it reveals it.
It instills discipline, confidence, endurance, and cooperation. Sports has power to change the world, and it speaks to people in a language they can understand. अब कुछ बात उर्दू में हो जाए. माय डियर पेरेंट्स, मेरे मोहतरम वालिदैन, बड़े ही रिस्पेक्टेड और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का दिन हम सब के लिए खुशी, जोश और फख्र का दिन है, क्योंकि आज हम सब मिलकर अपने तीसरे स्पोर्ट्स गाला का जश्न मना रहे हैं, यहाँ जमा हुए हैं. मैं गुफ्तगू का आगाज़ इस हकीकत से करना चाहूँगी, ख़ास करके मेरे डियर जो पेरेंट्स हैं, यकीनन वो मेरे साथ होते हैं इस मौजू के ऊपर, कि आज के जदीद दौर में सोशल मीडिया ने नई नस्ल के ज़हनों पर बहुत गहरा असर डाला है. बच्चे ज़्यादातर वक्त स्क्रीन के सामने गुजारते हैं, जिस्मानी मूवमेंट बहुत कम हो गई हैं और सोशल राब्तों की जगह वर्चुअल दुनिया ने ले ली है. ऐसे वक्त में खेल जिस्मानी, ज़हनी और इवन साइकोलॉजिकल सेहत के लिए इनकी अहमियत कहीं ज़्यादा बढ़ गई है. ये वो गेम्स और ये होते हैं मतलब स्पोर्ट्स कि जो ना सिर्फ आपकी बॉडी की सेहत के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि आपके दिमाग के लिए भी ज़रूरी हैं. और आज हमारे स्पोर्ट्स गाला का जो मेन स्लोगन है वो है मैदान आबाद, हस्पताल हस्पताल. अगेन पेरेंट्स विल ज्वाइन मी. मैदान आबाद, हस्पताल. जिस कौम के बच्चे एथलीट्स की फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व होते हैं, बिलीव मी, उन कौमों के हस्पताल वीरान हो जाते हैं और आप मैदान जो हैं वो आबाद हो जाते हैं. सो आज के स्पोर्ट्स गाला का हमारा मेन जो स्लोगन है, हस्पताल वीरान करो और मैदान आबाद करो. यस, ये वो अमल है जिसके ज़रिए हम सोशल मीडिया के मंफी और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं और बच्चों में नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और मेहनत का जज्बा पैदा कर सकते हैं. अलाइड स्कूल चाइना स्कीम ने हमेशा इस बात पर यकीन रखा है कि तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं होती, बल्कि हम इसे अपने तलबा की सलाहियतों को हमेशा निखारने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसमें स्पोर्ट्स आर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं. ख्वाह वो प्रोग्राम स्पोर्ट्स का हो, ख्वाह वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का हो, ख्वाह वो लीडरशिप प्रोग्राम हो अलॉन्ग विद द एकेडमिक्स. हम अपने तलबा को मौक़े देते हैं जिससे ना सिर्फ ज़हनी बल्कि कायदाना सलाहियतों वाले खुद एतमाद और बाइख़लाक़ इंसान बनते हैं. यही खसूसियात इस इदारे की पहचान है. ये इदारा हर साल मुश्किल हालात के बावजूद ऐसे शानदार इवेंट्स मुनक्किद करता है जो महज खेल नहीं बल्कि कामयाबी, ताउन, इस्तकामत और की अलामत होते हैं. मैं आज ये बात दिल से कहना चाहूँगी कि पिछले 2 साल से मैं हमेशा इस कोशिश में लगी रही कि स्पोर्ट्स गाला या स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करूँ, लेकिन हुआ यूँ कि पिछले 2 साल स्मोक और फॉग ने हमारे माहौल को इस कदर गंदा किए रखा कि हम नवंबर में ये एक्टिविटी कराने के काबिल ना हो सके. एंड आई वॉज वेरी मच सैड एट दैट टाइम. पिछले साल भी हमने पूरी प्रेपरेशन की थी स्पोर्ट्स गाला करवाने की, बट ड्यू टू स्मोक और फॉग बच्चों की पूरी तैयारी इधर ही रह गई. उससे लास्ट ईयर भी मतलब 2 ईयर से हमारा ये इवेंट नहीं हो पा रहा था. सो इस साल एक्टिवली मेरे स्टाफ ने, मेरी टीम ने मेरे साथ ताउन किया एंड दे सेड कि मैडम इस दफ़ा हम नवंबर में स्पोर्ट्स गाला करवाने की बजाय अक्टूबर में ले आते हैं, ताकि नेक्स्ट मंथ में अगर स्मोक का कोई सीन हो भी तो एटलीस्ट हमारी ये आउटडोर एक्टिविटी मस्ट बी कम्प्लीटेड. सो आई अप्रिशिएट टू माई ऑल स्टाफ who cooperate with me and make it possible that this event we are going to hold this event today. मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी. अपने स्कूल की, अपने इदारे की तारीफ़ नहीं बल्कि ये तारीफ़ आपके मुंह से सुनना चाहूँगी. आपके एंड से आनी चाहिए कि मेरे बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स ने इस बार मुझे कहा कि मैम
چھوڑیں ان ایکٹیویٹیز کو کروانے کا کیا فائدہ. جیسے سب لوگ چل رہے ہیں آپ بھی چلتے جائیں. کیا ہو جائے گا؟ کوئی کروا رہا ہے, کوئی اتنی ایفرٹس لیتا ہے یا کوئی اتنی ہیکٹک کمپٹیشنز یا ایونٹس منعقد کرواتا ہے, تو میم لیو دس. بٹ میں نے اپنے اسٹاف کی بات کو سنا, غور سے سنا اور تحمل سے مسکرا دی. مسکرانے کے بعد میں نے صرف یہ کہا کہ مجھے چلتے رہنا منظور نہیں, مجھے چلتے رہنا منظور نہیں, آگے بڑھنا منظور ہے. Then my whole staff members say back, Inshallah ma'am, we will be with you and Inshallah successfully we will conduct this event. So اس سال یہ ایونٹ ہم نے نومبر کی بجائے اس کو اکتوبر میں ریورس کیا تاکہ آج ہم یہ ایونٹ کروا لیں. اور ہمارا اور میرے اسٹاف کی ایکچولی یہی ڈیمانڈ میم چھوڑیں, جیسے باقی اسکولس بھی تو پورا سال کوئی ایونٹ ہوتا ہی نہیں ہے. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ, میں اپنے انر کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی, میں اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی, کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایک مکمل اسٹوڈنٹ, ایک کمپلیٹ اسٹوڈنٹ وہ ہے جو کتاب کی سمجھ کے ساتھ ساتھ میدان عمل یعنی پریکٹیکل لائف میں بھی مقابلہ کرنے کی سکت رکھتا ہو. آج کے دن اپنے اساتذہ, نان ٹیچنگ اسٹاف اور پیرنٹس کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کروں گی, جن کی دن رات محنت کے بعد ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ آج ہم یہ ایونٹ کروانے کے لیے ریڈی ہیں. یہ ایونٹ صرف بچوں کی محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ خاندانوں کی کوشش کی وجہ ہے, یعنی کہ ٹیم ورک ہے جس میں پیرنٹس انوالو ہیں, جس میں میری ٹیم, اسکول کی ٹیم, کمپلیٹ ٹیم انوالو ہیں اور جس میں بچے انوالو ہیں. سو آج ہم نے یہ ٹرائنگل کمپلیٹ کی ہے. اب آخر میں تمام ایتھلیٹس کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کے دن جیت یا ہار سے زیادہ آپ کی کوشش, جذبہ اور ایمانداری ہے. پورے دل سے کھیلیں, جم کے کھیلیں, اپنی ٹیم کا ساتھ دیں اور یاد رکھیں ختم ہمیشہ جیت ہمیشہ انہی کی ہوتی ہے جو دل سے کھیلتے ہیں, جم کے کھیلتے ہیں. آئیں جذبے, توانائی اور اتحاد کے ساتھ اس سالانہ اسپورٹس گالا کا آغاز کرتے ہیں. اور میں آل اسٹوڈنٹس اور اپنے ایتھلیٹس کے لیے بیسٹ وشز اینڈ فار دیئر سکسیس آئی ایم پریئنگ فار دیم. To all your young together, let us make this sports day a celebration of unity, integrity and the boundless energy that defines our school spirit. Let the competitions begin and may this day mark another wonderful chapter for our school legacy. Thank you so much, my dear parents. I love you, my dear parents, and I love you, my dear athletes. I am always with you. جم کے کھیلو, کھل کے کھیلو. آج آپ کا دن ہے, آج میرے اسٹوڈنٹس کا دن ہے. اینڈ آئی آلویز ریسپیکٹ مائی پیرنٹس فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ, بٹ ایز یو نو فار یو مائی ہارٹ ڈونٹ ہیو باٹم. تھینک یو سو مچ. الائٹ اسکول چائنا اسکیم کیمپس زندہ باد. پاکستان, 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 پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو.